प्रोग्राम चलाने के लिए आप ब्राउज़र में जाएं, लोकल होस्ट लिखें, अपने फ़ोल्डर का नाम लिखें और अपने वेब पेज का नाम लिखें। वेब पेज का नाम है first.php। ये पहला प्रोग्राम हमारा रन हो गया। हमने फ़ोल्डर कहाँ सेव किया है? Xampp htdocs में अपना एक फ़ोल्डर बनाया है माई वेब के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। इसके अंदर आपने वेब पेज बनाया है, तो PHP के सारे वेब पेज यहाँ रखने होते हैं। इसको चलाने के लिए आप फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे, अपने फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे और first.php। ये माई वेब का फ़ोल्डर htdocs में होना लाजमी है। ये htdocs के फ़ोल्डर में होना लाजमी है। Xampp htdocs में जाएं, वहाँ अपना कोई फ़ोल्डर बनाएं। मैंने माई वेब बनाया, उसके अंदर अपना पहला पेज, अपने सारे वेब पेज यहाँ PHP के यहाँ सेव कर दें। चलाने के लिए आप लोकल होस्ट लिखें, फिर अपने फ़ोल्डर का नाम लिखें और अपने वेब पेज का नाम लिखें और एंटर कर दें। ये आउटपुट आ गई। यहाँ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ मैं आउटपुट में अली लिख देता हूँ, तो इसको मैंने Ctrl+S किया, सेव किया। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अली लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारा पहला वेब पेज चल गया।